my class. Okay, welcome everyone. हम officially आज का session start कर रहे हैं. This is an introduction to Neuro Linguistic Programming. Before we begin, I would like to know a bit about you. So, where are you from? I understand, by the way, somebody just sent a message. It's Maghrib time. आपके पास अगर मगरिब का नमाज का time हो, please go and say your prayers and then come back. You will, I will be here, inshallah ta'ala. So you can join after your prayers. So where are you from? Those of you who are here, आप कहाँ से हैं? Can you just let me know किस शहर से, किस मुल्क से लोग इस वक्त मेरे साथ attached हैं? It's like I see there are so many people, mashallah, who are keen to learn and keen to improve their lives. So I see name. What's your full name? Samsung. Who's this Samsung? Karachi, it's nice. एक चीज मैंने देखी है. It's a pattern that I've seen. A lot of times लोग sessions के लिए मेरे पास messages करते हैं, और इस बात पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ, and मुझे ज़ाती तौर पे इससे फर्क नहीं पड़ता, but it shows something about the person, and that is कि लोग जब सेशन के लिए आते हैं तो वो अपना नाम नहीं बताते हैं. Sometimes people send me a message and the whole story, the whole problem, and they don't mention their problems. And if I ask what's your name, they don't respond. I don't even know कि जो मैसेज करने वाला है वो कोई मर्द है या खातून है या हजरत है, कोई बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है. They've just sent me a story, whatever their problem may be, and I have no idea who this person is. So how can I guide the person? Okay, so that's the only reason I ask people. मुझे ना ही आपका नाम याद रहेगा, honestly, इतने लोगों से interactions होती हैं, और ना ही लोग इस तरह से मुझे याद रहते हैं. But it's good that I know at least who I'm talking with in the moment that I'm talking with someone. So I see Annie from Lahore, Salim from India, UP. Welcome, Salim. Welcome, Annie. Okay. Welcome, Nausheen. I see Nausheen from Karachi. I see Aruj Fatma from DG Khan. And I see Nadia Shafi from Karachi. So I got your name now. And I see Umar Javed from Lahore and Shahina from Karachi. I see Ahmed from London, and I see Luqman, and then Maqsood from Sahiwal, and Zulfishan from Karachi, and then Maria from Muzaffarabad, and Nadia also from Karachi, and Sayyida Arfeen from Karachi, Itrat from Rawalpindi. Welcome, all of you. So I see there are some people that I know. There are some people that have either taken sessions with me or have taken some training with me. So, and there are some new people as well. So welcome everyone. Welcome Iram. Iram is also here. Itrat is my student. Iram is my student. So I see number of familiar names as well. So आज का जो हमारा session है, this is just an introduction to NLP. Okay, NLP, Neuro Linguistic Programming, क्या चीज होती है, किस बला का नाम है. Okay, I come across a lot of people these days, and it's like I just wonder where people are going and what they're doing. और वो जो चीज कर रहे होते हैं वो कर ही रहे होते हैं. Like they have some weird ideas about NLP, and those ideas are based on their hallucinations or misinformation. I don't know what it is based on, but people have some very weird ideas. It's like, so there are people, and I don't know, by the way, अगर पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग हैं, जो लोग NLP को इस वक्त promote कर रहे हैं, whether they have those wrong ideas and they are promoting it, or whether people are getting those ideas from movies or internet, I don't know. But all I do is I notice that people have some really weird ideas about NLP. And some of the things that I hear, and मेरे पास messages में भी लोगों के जो होते हैं, they think कि NLP कोई ऐसी जादुई किस्म की कोई चीज है कि जो NLP का कोई मास्टर होगा तो वो आपके दिमाग को यूं करके प्रोग्राम कर देगा, और मैं जैसे आंखें बंद करके यूं बैठूंगा
और सब मेरा दिमाग जो है प्रोग्राम हो जाएगा, बस आंखें खोलेंगे एंड देन एवरीथिंग विल बी ओके। इट वुड बी ग्रेट अगर ऐसा हो सकता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। ओके, समटाइम्स लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि उनकी कि जो एक हिप्नो एनएलपी का सेशन होगा ना, तो बस उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। समटाइम्स लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि अगर उन्होंने कोई छोटा सा एनएलपी का कोर्स कर लिया तो बस उसके बाद उन्हें कुछ सीखने की, कुछ समझने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बस सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। ओके, so these are all misunderstandings I see a lot of people have. And I've been teaching those of you who don't know me. मैं एनएलपी के साथ पिछले कम से कम 30-32 साल से इन्वॉल्व हूँ, and like I've been learning NLP for such a long time now, or मैं 1997 से I've been teaching it, and since 2000 I've been teaching NLP practitioner and master practitioner जो certification trainings होती हैं, but उससे पहले मैं मुख्तलिफ दूसरे courses NLP के छोटे courses भी करवाता रहा हूँ, और अभी तक at तकरीबन as an estimate probably around 35,000 hours I have taught NLP in various programs, and I've used it with thousands of people. And sometimes मैंने जो चीजें आज रिसेंटली सुनने में आ रही हैं एंड सोशल मीडिया पे देखने में आ रही हैं, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब मैंने एनएलपी में की फील्ड में कदम रखा था और मैंने जब चीज़ों को सीखना शुरू किया था, ये वियर्ड आइडियाज उस वक्त भी लोगों के जहन में मैंने नहीं सुने थे जो आज मैं देखता हूँ। ओके, एंड आई डोंट नो ये वियर्ड आइडियाज जो है कहाँ से पॉपअप हो रहे हैं लोगों के जहनों में। मेरा अपना ख्याल ये है, इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, एंड दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो एनएलपी में are and they have like certificates, not one certificate, 2, 3, 4 certificates. And what I know, having worked, spent my life and more than half of my life in this field, and this is all I have done for last 30 years. I don't have any other job, any other business. This is all I do. Okay, so I'm speaking from experience. I'm not speaking on the basis of some theories that I've read in some books. What I'm seeing is that people with number of certificates are basically incompetent in, if they have 3 certificates in NLP, they are incompetent in 3 areas of NLP. They are not competent, they are incompetent in 3 areas, because certificate means nothing actually, if you really think about this. But so what is NLP? अगर हम बेसिक डेफिनेशन में जाए, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, कुछ पुरानी वीडियोस भी हैं, कुछ निस्बतन नई वीडियोस भी हैं। मेरा एनएलपी होम स्टडी कोर्स है, उसकी भी क्लिप्स मैंने शेयर की हुई हैं। बहुत आसान लफ्जों में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहन को, आपके जहन को, हमारे जहन को लैंग्वेज के जरिए प्रोग्राम करना। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। प्रोग्राम के लफ्ज से अक्सर लोग इस गलत फहमी में शायद आते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। कंप्यूटर में और इंसान में एक फर्क होता है। जॉन ग्रिंडर जो एनएलपी के को फाउंडर हैं विद डॉक्टर रिचर्ड बैंडर, इनकी एक बड़ी खूबसूरत सी एक सेइंग है, एंड आई थिंक ही वाज आल्सो कोटिंग समवन एल्स, एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस कि अगर अगर एक पत्थर है, ठीक है, या एक बॉल है, फुटबॉल है, आप उस पर अगर किक मारते हैं, एंड कि अगर आप सर्टन प्रेशर के साथ मारेंगे किक, सर्टन एंगल पे किक मारेंगे, और अगर हवा की डायरेक्शन इस स्पेसिफिक अंदाज से चल रही है, तो यू कैन प्रिडिक्ट विद क्वाइट एक्यूरेसी यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड फिजिक्स की इक्वेशंस कि ये बॉल जो है इतने प्रेशर पे इस एंगल पे हिट होने पर इतनी हवा के अंदर कहाँ जाकर गिरेगी। आपने कभी देखा होगा जो स्नूकर के जो ट्रिक शॉट्स वाले लोग होते हैं, सो दे नो एग्जैक्टली, इट्स लाइक अगर बॉल को यहाँ पे हिट किया तो बॉल यहाँ से इधर जाएगी, उसके बाद दूसरी हिट करेगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगी। कैरम खेलने वाले जो लोग होते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर स्ट्राइकर को एक स्पेसिफिक प्रेशर से, स्पेसिफिक एंगल से, स्पेसिफिक पॉइंट से हिट करेंगे तो वो कहाँ वो जाएगा, उसके बाद उसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड with quite precision. So same is the case with computers.
But when it comes to humans, humans are different. So अगर आप फर्स्ट करो, not just humans, जानवर भी हो, okay? फर्स्ट करो कि एक कुत्ता है. अगर आप कुत्ते को एक खास प्रेशर पे किक करेंगे, एक खास एंगल पे किक करेंगे, तो मुख्तलिफ कुत्ते मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ अंदाज से आपके ऊपर रिएक्ट करेंगे. सो दैट्स बिकॉज दैट्स अ लिविंग थिंग. सो जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, सो प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर, कि मैंने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया और मैंने उस प्रोग्राम को रन करना शुरू कर दिया, दैट्स डिफरेंट देन प्रोग्रामिंग ह्यूमन ब्रेन. ओके, सो प्रोग्रामिंग ह्यूमन ब्रेन इज नॉट कि मैंने कोई सीडी यहाँ पे लगाई या यूएसबी मैंने कान के अंदर लगाई, उसके बाद कान प्रोग्राम हो गया. नाउ यू मे फाइंड इस किस्म की चीजें मूवीज के अंदर हो सकती हैं, बट प्रैक्टिकली जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं होता. आई विश ऐसा हो सकता, मगर ऐसा नहीं होता. So I find a lot of people who have this kind of misunderstanding, who think कि it's like जैसे दिमाग को प्रोग्राम कर देंगे, एक बार यूं आंखें बंद करके बैठेगा, उसके बाद जब आंखें खोलेगा तो सब सही हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू इट डजंट वर्क दैट वे. अगर आप में से कोई भी इस गलत फहमी में है, तो you will end up frustrating yourself. I mean, I can tell you most honestly, you will end up frustrating yourself until you get out of this delusion. That's a delusion. It doesn't work that way. Not in this field. I don't know anyone who can do that. I've worked with the founder of NLP. I've seen how he does things. I've seen people, it doesn't work the way that people think. Okay. Now, so what does NLP do? What is NLP? NLP is something that you do every day with yourself. This is nothing new. You do it with yourself, programming your brain through your language. So when you get up in the morning and you are telling yourself, फिर उठना पड़ेगा, फिर ऑफिस जाना है, फिर वही सारी चीजें, फिर ये, you are programming yourself for the day ahead. And if you're getting up in the morning and say, yes, Alhamdulillah, I'm alive, Alhamdulillah, everything is good, okay, I'm going to have a fantastic day, you are programming yourself through your language. So the effects of language on your nervous system. NLP में जिस चीज को हम स्टडी करते हैं, that is the effects of communication on human neurology. इंसान की कम्युनिकेशन, उसकी बातचीत का असर उसके अपने ऊपर या किसी दूसरे शख्स के ऊपर. सो अगर मैं आपके साथ फर्ज करो कोचिंग सेशन कर रहा हूँ या मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सो व्हाट आई वुड सी इज कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, और वो कम्युनिकेशन आपके जहन पे क्या इफेक्ट कर रही है. और इफ इट इज प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट दैट इज कॉजिंग यू टू फील स्टक, हाउ can I help you change your communication so you can move on in your life? A lot of times I've seen people who have these ideas, like they have perceived limitations. What do I mean by that? कभी कभी फर्स्ट करो कि कोई शख्स है जिसके साथ कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, और वो शख्स जो है रेस में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उसके साथ कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके अंदर उनसे पैर में उसके कोई डिसेबिलिटी है या कोई और उसकी, उसकी जो डिसेबिलिटी है वो एक रियल चीज है. लेकिन एक शख्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, हाथ पांव उसके सही है, सब कुछ सही चलता है, लेकिन उसने यहाँ पे अपने बना रखा है एक ख्याल, और वो अपने आप से कहता रहता है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दौड़ सकता, मुझसे नहीं होगा. Now that's a problem. That's a thought. And what every time that person is telling himself or herself, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, and वो फलाना तो कर सकता है क्योंकि वो ऐसा है, और मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं वैसा हूँ. So that person is programming himself. He's doing neuro linguistic programming on himself or herself by telling himself those things. So every one of you is already a neuro-linguistic programmer. The problem is not that you are not a neuro-linguistic programmer. The problem is that people who are programming themselves, they are not always programming themselves to do good in their life.
to perform at their best. People are short selling themselves off their abilities, programming themselves off their abilities, for limitations. Does this make sense? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Type 1 if it makes sense. Okay, so I see lots of ones here. Very well explained. Yes, sir. I like this. Okay, so and it's good that it makes sense. Okay, now, so a misunderstanding that people have is कि ये जो मेरी जहन में programming हो गई ये fixed है, and that's an old school of thought. So आज से कोई over 100 years ago, Sigmund Freud came up with some theories of the mind, and it's like some psychologists adopted those theories, and since they were practiced for decades and decades, and वो इतनी ज़्यादा masses के अंदर popular हो गई, people started believing those theories as if they're right, as if they're facts. Okay, so people have this, oh जी ये मेरे बचपन की मेरे अंदर कुछ चीजें हैं, it's like मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे साथ माजी में ऐसा हुआ था. And it's like वो उम्र बचपन की दिल बचपन का. Okay, so they're living in 2022 while in their minds they're living in 1972. Okay, or 1982, or whatever their past is. But in physical domain, they are in this current world. So what happens with a lot of people is they tend to believe some certain theories. दूसरे लफ्जों में आप कहिए, they have been programmed into believing those limitations which they get from some theories. Oh, researchers have said this. Okay, so Neuro Linguistic Programming, and I'm repeating this so many times because I see a lot of people have this misunderstanding about the basics. ये जो fundamentals होते हैं ना किसी भी चीज के, ये इतने important. It's like you need to be a fundamentalist in order to really grasp things. आपकी जो grounding है किसी चीज में, अगर वो बुनियाद आपकी, आप जो बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हैं अपनी सक्सेस की फाउंडेशन एनएलपी में, यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनएलपी और इन योर लाइफ, you need to have a solid foundation, a solid base for that. And if you don't have a solid base, if your base is unsolid grounds, अगर फर्ज करो कि समंदर की रेत से आपने अपना महल बनाया है, तो वो चंद लहरों से ढह जाएगा. So आपकी जो फाउंडेशन है, that's so critical. Even मेरे जो basic or advanced courses होते हैं, I repeat these things in my courses again and again, so people understand, they get the basics. The basics are so important, but most people miss on those basics. So again, coming back to the question, you have a question, you can type your question here and I will answer. I have a number of questions in my mobile, which some of you sent, and I'll answer those questions later, inshallah ta'ala. And so somebody said, I understand very well, seriously. Alhamdulillah, you understand. Just a moment. So coming back to the definition, and I can define this in many different ways. So programming sabse pehle. Programming, basically we are referring to different behaviors, different attitudes that you show, the different behaviors that you show. Urdu mein jaise aap kehte hain ravaiye mukhtalif qism ke jo aap karte hain. Linguistic refers to our language, our communication, जिसमें हमारी verbal and non-verbal दोनों किस्म की communication आती है. Okay, हम क्या कह रहे हैं और हम कैसे कह रहे हैं. एक ही बात मुख्तलिफ अंदाज से कही जाए तो उसके माने चेंज हो जाते हैं. अगर मैं आपसे कहूं अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों के आने की जो मुझे बड़ी खुशी हुई,
बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए मेरे इस प्रोग्राम में। आप लोगों को देख के मुझे जितनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं आपको उसका इजहार कर नहीं सकता। आप लोगों के ये आपने जो मेरी इज्जत अफजाई की है अपना वक्त निकाल के, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है जनाब, है ना। डू आई साउंड हैप्पी? Because my words are saying one thing, my tone is saying something else. Okay. Now, on the other hand, it's like sometimes you have the मोबाइल छीन गया आपका, नया मोबाइल छीन गया यार, बहुत अफसोस, इतना दुख हुआ। नया मोबाइल अभी अभी कल ही लिया था हमने, वही बता रहे थे यार, बहुत क्या कैसे हालात आ गए यार, नया मोबाइल आपका छीन गया यार, बड़ा अफसोस हुआ यार। ओके, अफसोस है। Do I sound like I'm sad? Do I have anything like? But there's this huge difference between words and body language, in physiology, in tonality. So a lot of times people have this, they learn something every day and every way. I'm getting better and better. And then now they're programming themselves. Every day and every way, I'm getting better and better. Every day and every way, I'm becoming better and better. Every day and everywhere. And this is, sir, मैंने इतनी बार बोला कोई फर्क ही नहीं पड़ा. Yeah, because it's not just the words, it's how you say those words. Okay, it's about the impact. Your brain, you know, uh, takes things differently than the way that you're trying to say them. So saying positive things will not have that effect if you're not saying in the right way. It's like if I'm saying to you, I'm very confident. And if I'm saying to myself, I'm very confident. Every day in every way, I'm becoming more and more confident. Every day in every way, I'm becoming more and more confident. And every day in every way, I'm becoming more and more happy, and I'm happier. Every day and every way, I'm happier and happier. मुझे पता नहीं सर, वो मैंने देखा एनएलपी काम नहीं करती है। आप सही कह रहे हैं जनाब, एनएलपी काम नहीं करती है। मैंने कहा ना सर, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है सर, मेरे पास 4 सर्टिफिकेट है एनएलपी में, मगर फिर भी मेरे पर काम नहीं करती। मैंने कहा ना भाई, आप इनकॉम्पिटेंट है चार चार एरियाज में, यू नीड अ लॉट ऑफ वर्क। सो it's it's about understanding how language influences a human brain. And then it's not a brain only. When you're working with people or even with yourself, you have to see who is in front of you, what state of mind this person is in when I'm working with this person. A person, the same person in one state of mind, will take your suggestions differently than the same person in a different state of mind. Those of you who have, it's like, think of your family members. कभी आपके घर का कोई भी शख्स who's in a really good mood, आप उसको एक बात कहते हैं, they take it differently. उसी शख्स से अगर आप कोई उसी अंदाज में दूसरी बात कहते हैं, do they take it differently? Yes or no? Just like, and how come? Why is that? And then people think, it's like, oh, so NLP की कौन सी टेक्निक जो है वो मैं इस्तेमाल करूं? Because it's like, so when you're thinking in terms of techniques of NLP, you are thinking in the wrong direction. So a lot of people ask me, sir मुझे ये बताएं, मेरे अंदर जो है ना ये फलानी चीज है, मुझे इसके लिए कोई टेक्निक बता दें. And I tell them, I'm sorry. Sometimes people send me text messages and they expect कि मैं उनको कोई उस पे टेक्निक बता दूं. And I tell people, you see, I don't do coaching on phone. I don't do coaching on text messages, because this is not how it works. I have to see and I have to talk to the person and know, what state of mind this person is, what would be most useful for this person. It's not in the technique. It's not about the technique. It's about the person that I'm working with. Does this make sense?
So a lot of people, when they are thinking of learning NLP, they think in the wrong direction where they're when they're thinking of techniques. I don't know where they get these ideas from. So for example, मेरी जो NLP की जो trainings होती हैं, इसके जो different levels होते हैं, इसमें जो lowest level होता है, यानी जो सबसे पहला level होता है certification का, वो NLP practitioner training कहलाती है. और गौर कीजिए, NLP practitioner training means someone who practices NLP. Okay, not someone whose brain is programmed through NLP, but someone who learns it and then practices it. That's NLP practitioner certification training. इसके बाद जो next level होता है, it's called NLP master practitioner certification training. So someone who has mastered practitioner level stuff and moved on to a higher level, that's master practitioner. Then third level जो होता है, that's trainer. That's NLP trainer, someone who has mastered practitioner, master practitioner level to the point that he or she can deliver it and teach it to other people. Then uske baad the highest level certification, which is NLP master practitioner certification. Master trainer certification, and that's the highest. And I get a lot of messages. They say, sir, मैं NLP का master trainer बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ. I said, great, fantastic. Do you have any previous NLP experience? No. कोई ट्रेनिंग की आपने? No. सीधा मैंने जी बच्चे ने स्कूल में भी एडमिशन में मैं जो है ना सर्जन बनना चाहता हूँ. ओके बेटा स्कूल में एडमिशन ले? नहीं, मैं सीधा मैं सर्जन बनूंगा. Okay, I don't know if it can work, but not in my knowledge. I hope with this artificial intelligence going on these days, someone will come up with an app someday, कि लोगों के दिमाग में यूं करके वो कुछ प्रोग्राम कर दिया गया, जैसे वो एक मैट्रिक्स मूवी आई थी, तो यूं आंखें बंद कर इनका, हाँ जी अब मैं आंखें खुल गई, मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ, आप लेटिए, आपका भी मैं हार्ट इम्प्लांट करता हूँ. ओके, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है. सो जब तक हम मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल मेरे इल्म में तो कोई नहीं है. अगर आपके इल्म में हो तो जरूर मुझे बताइएगा. आई वुड लव टू लर्न दैट एज वेल. सो यहां तक हमने जो बात की है, मुझे एक बात बताइए, why would you want to learn NLP? आपके ख्याल में, based on whatever you have got, why would you want to learn NLP? Because I'm coming to something, I answer this question and I'll tell you something very important. That's one of the key principles in NLP. अपनी बेहतरी के लिए, somebody said self improvement के लिए, somebody said to become better at my skills, to be positive, to be more productive and confident. Sorry, can you repeat your questions? Why would you want to learn NLP? That's my question, because I want to master my thoughts and emotions. And self-improvement. Basically, I want to know about NLP. So you know about NLP, you can go on Google and you will know about NLP. You can open YouTube and you will know about NLP. The question is, why would you want that? Is it like you want to just discuss with people, or do you want to see some results in your life? Because here's an interesting thing about NLP. NLP is not something, and anyone who knows NLP will tell you this. NLP is not something which you read by, which you learn by reading books. It is something that you learn by doing it. आप स्विमिंग पर कितनी किताबें पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं मुझे स्विमिंग आ गई है?
कितनी YouTube की वीडियोस देखने के बाद आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बस अब मैं स्विमिंग कर लूंगा? So I'm generally easy to talk to, personal growth, also want to help people navigate their lives. Effective communication, successful life to improve quality of life. Now, it's like आप एक चीज अगर गौर करें, I don't know if you can see this chat or not because ये मेरे साथ मेरे पास आ रही है, and if you can, effective communication and successful improve quality of life, and then your right mentor is necessary can't until you dive in the waters. That's correct. Now here's the thing, the same thing goes with NLP. Same thing is with NLP. Not just NLP, any skill. Any skill. अगर आप it's if you want to become a cook and आप उठा के रेसिपी किताबें पढ़ते रहें, will you become a cook? You will know some recipes. अगर अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं, आप जाके YouTube पे वीडियोस देखें, will you say ना मैं just think about this. Will you take any of your family member who may need surgery to a person who tells you मैंने YouTube पे वीडियोस देखे जी सीखी है सर्जरी? Will you do that? कोई is there anyone who would do that? Now खुद को समझने के लिए NLP के जो की प्रिंसिपल्स हैं, आज से तकरीबन 100 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम था नेपोलियन हिल. नेपोलियन हिल जो था, उसने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए and he studied some of the most successful people of his time, जिसमें उस जमाने के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स के लोग और बिजनेस के लोग, कई मुख्तलिफ फील्ड्स के उसने लोगों को उसने स्टडी किया. और उसके बाद उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था लॉ ऑफ सक्सेस, जो 1928 में पब्लिश हुई थी. सो लॉ ऑफ सक्सेस में उसने 17 कैरेक्टरिस्टिक्स, 17 क्वालिटीज बताई कि जितने कामयाब तरीन लोग मैंने स्टडी किए, इन सब में ये चीजें थी. और इनमें जो लोग नाकाम मुझे मिले, उनमें इनमें से कम एक कैरेक्टरिस्टिक, एक क्वालिटी की कमी थी. और उसने कहा जो सबसे मेजर क्वालिटी थी और जो सबसे ज्यादा कमी जिस क्वालिटी की मुझे मिली, वो थी जो पहली क्वालिटी उसने लिखी अपनी किताब में. और उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके चैप्टर का टाइटल है अ डेफिनेट चीफ एम. एनएलपी में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम किसी से करते हैं when we are working with people or with ourselves, the question is, what do you want? आप में से वो लोग जो मेरे पास कोचिंग सेशंस के लिए आते रहे, okay, when I ask you this question, this is the first question I ask. Say, why? What do you want? You are with me, you're taking coaching with me. What do you want? When people contact me and they say I want to learn NLP, I ask them this question: why do you want to learn NLP? It's like, what are you looking for in NLP? Maybe it's not for you, it's not for everyone. Okay? Just because this is a really good thing, this is because a very powerful thing, this can really change people's lives, it doesn't mean that you're ready for it. Do you understand? Not everyone is ready, not everyone can actually grasp this, and it's okay, but everyone can benefit from it, yes. So because the first question is what do you want, and you know what, when I ask this question, so people give me these kind of answers: I want to improve myself. Now what does that mean? I want to be better. Better than what? Better than whom? I want to be more confident. Confident to do what? What makes you think that you are not confident? I want to improve my business. Which business? I want to do something in life. What is that something you want to do? You scratch your head, you are doing something in your life. Okay, it's like do something. What does that mean?
मैं जी कुछ करना चाहता हूं और कुछ बनना चाहता हूं और मैं like what is that कुछ? Definite chief aim, that's the first thing. Know your outcome, know exactly what you want. So when you're working with people, the same question. So when you come to me for a coaching session or for my training, when I ask you, what do you want? What do you want from my training? So I can customize my training for you according to your needs. It's not, oh, अच्छा ये है ना तो अब मैं इसके ऊपर ये एंकरिंग की टेक्निक करता हूँ तो अब मैं इसके ऊपर सब मोडालिटीज अप्लाई करता हूँ तो अब मैं इसके ऊपर हिप्नोसिस करता हूँ. No, it doesn't work that way. Do you know any doctor कि जब पेशेंट उसके पास आए तो अच्छा ये आया ना, इसको ऐसा करता हूँ, इसको पहले इंजेक्शन लगा, नहीं नहीं इसको पहले पैनाडॉल देता हूँ, पैनाडॉल देने के बाद ना इसके बाद फिर इंजेक्शन ठोकेंगे, इंजेक्शन से अगर इसको फायदा नहीं है तो ऐसा करेंगे इसका पेट खोलेंगे, लेकिन इसने कह रहा है सर में दर्द है तो फिर पेट तो खोल लिया होगा हमने तो क्या करेंगे पेट बंद करेंगे फिर उसके बाद इसका सर खोलेंगे, हम ये ठीक रहेगा. यू थिंक would any qualified doctor do that? And would you ever even go to a doctor who would operate like that? Is there anyone, by the way? So when you're working with people, the first question in NLP is know your outcome. Know exactly what you want. And most people fail at this first step. Most people fail at this first step. They don't know exactly what they want. I've worked with, I don't know, hundreds of people. जी मैंने business किया था और business मेरा जो है वो नहीं चला. And that means that I'm not capable of doing business. Great. So जब आपने business किया था, did you like do some research? हाँ जी. कितनी research की थी? वो 3 दोस्तों से उन्होंने बात की थी. उन दोस्तों ने उनको मशवरा दिया था कि ये तुम जो है ना तुम ये कर सकते हो. I've seen people who become coaches with the same idea. You know, people come to me and then they say, "Ji, I want to become a coach." Oh, great. Why do you want to become a coach? Because मेरे दोस्त हैं वो लोग मुझे कहते हैं कि मैं जो है जब उनसे बात करता हूँ तो उनको वो कहते हैं यार तुम बहुत अच्छे कोच हो तो तुम कोच बन सकते हो तुम्हें कोच बनना चाहिए. They don't know what coaching is. आपके दोस्तों को पता है कोचिंग क्या होती है? नहीं. आपके दोस्त are they qualified to tell you that you should be a coach? नहीं. But just because your friends have told you that you should be a coach, do you think this is the right choice that you're making? So the first question is know your the first principle in NLP is know your outcome. That's the first thing. The basic question in NLP is what do you want? Define it in clear, specific terms. So just as an example, I want to look good. Is this specific? And I want to weigh 150 pounds and I want my waist to be 34 inches, my chest to be 38 inches, my stamina, my pulse rate should be within 40 to 180, whatever. I don't know kya uske andar hote hain. But there are some specific numbers. Okay. And I want to be able to कि मैं जब if I jog, I can jog up to 3 miles every day. Is this specific? I want to be healthy. Which is more specific, the first one or the second one? I want to have more money. Is it clear? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज्यादा पैसे हों. मैं अपनी इनकम कुछ बढ़ाना चाहता हूँ. मैं इसलिए एनएलपी सीखना चाहता हूँ बिकॉज मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ. इज दिस क्लियर? So if a person says I want to earn
3 million rupees every year. I want to earn more money. Which is better? I want to earn more money or I want to earn 3 million rupees a year? Which is more specific? I want better relationships. मैं चाहता हूँ घर पे जो है ना बिल्कुल पीस रहे. तो फिर उसके लिए जो है वो होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, वो हमारे ये एनएलपी का तावीज है, इसको एक यहाँ बांधे, ये इसका आपके बगल में होना चाहिए, आपके जिस्म से इसका टच जरूरी है. ठीक है. और एक तावीज जाके जो है वो कमरे में अपने घर के अंदर लगाइएगा दरवाजे पे, ताकि लोग आते जाते हैं उनके ऊपर बरकत इसमें होगी. एनएलपी के बहुत सारे हमारे पास मुख्तलिफ तावीज अवेलेबल है. ये तावीज इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपके सारे घर के ताल्लुकात जो है सब ठीक हो जाएंगे. ऐसा कोई तावीज है नहीं हमारे पास. सो the first thing is, be specific. If you think of, creating results in your life, in your relationships, in your finances, in your business, in your career, develop the habit of getting more specific, becoming more specific about what you want. That's the first step. The second thing is, it's like having some outcome in your mind. A lot of times people have outcomes here. So they don't have anything in written form, they have something here and they're very clear here, but there is nothing on the paper. So it's like people say, जी मैंने business start किया था, fail हो गया, और मैंने उसकी जी feasibility भी तैयार की थी. अच्छा feasibility तैयार की थी आपने, तो आपने research नहीं, वो मेरे दिमाग में सब कुछ था, और अभी एक नया business करना है, उसका भी दिमाग में पूरा plan है. पेपर पे है कुछ नहीं है, दिमाग में सब कुछ है. Okay, so when people start with that, दिमाग में कितना होता है, एक आइडिया अभी आया था, थोड़ी देर के बाद वो आइडिया गायब होकर कोई दूसरा आइडिया आ चुका होता है, and then ideas keep on changing. So the first thing is, when I say specific doesn't mean that it's in your head. Specific means that it is on the paper, and when you write it down, whether you're talking about your health, whether you're talking about your wealth, whether you're talking about your relationships, when you write it down, it will be specific, and जब वो specific होगा, you will find it will be much easier for you to focus on that. क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एक चीज ये होती है कि जी वो मैंने गोल एक था और मैंने उस पर जब काम करना शुरू किया, शुरू में था, और उसके बाद जो है मैं उस पर अलग हो गया. मेरा फोकस, और फिर मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. Okay, and that's a wrong assumption. They are reaching a certain assumption based on wrong strategy. यानी अगर फर्ज करो कि एक शख्स जो है वो कोई खाना बनाने के लिए कोई रेसिपी है, और वो रेसिपी गलत इस्तेमाल कर रहा है, और गलत रेसिपी इस्तेमाल करने की वजह से जो डिश वो बनाना चाह रहे हैं वो डिश खराब हो रही है, तो खराबी रेसिपी में है या उस शख्स में है जो रेसिपी इस्तेमाल कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? उसको रेसिपी चेंज करने की जरूरत है या उस शख्स को अपने अंदर कोई खराबी को दूर करने की जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? So Umar says it's in the person. So it's like, so some right person will use that recipe, they'll make the right thing. Because this means if there is something wrong in the person, इसका मतलब है रेसिपी ठीक है, दोनों चीजें खराब नहीं है. तो वो अगर किसी सही शेफ के पास आ जाएगी ये खराब वाली रेसिपी, तो it will start working, right? Just think about this. But that's how a lot of people think. Rather than realizing they're taking wrong steps, they think there is something wrong with me. So I come across a lot of people say, जी मैंने वो मैंने किया था, मैं फलाने उन साहब के पास भी गया था, बट हुआ नहीं, उन्होंने तो बड़ी बड़ी मेहनत की थी मेरे से, बड़ा उन्होंने किया, मगर कुछ मेरे साथ ही खराबी है. No, that's a wrong assumption you are treating. And if you reach that kind of assumption, that's again, you're programming yourself for more failure. And then what? Then people start looking for solution. It's like मेरे अंदर ये खराबी है तो मुझे इसको ठीक करना है. आपने वो वाली स्टोरी सुनी है कि एक साहब थे, उनकी घर की चाबी जो थी वो कहीं खो गई अंधेरे में, और वो जाके कहीं और तलाश कर रहे थे,
इसलिए क्योंकि जहां पर खोई थी वहां अंधेरा था, तो वहां तलाश कर रहे थे जहां पर रोशनी है, एंड जहां तलाश कर रहे थे वहां पर नहीं मिलनी थी, कभी नहीं मिली। मैं इसकी मिसाल इससे देता हूँ कि आपके पास एक बुक शेल्फ है, आपने कोई किताब टॉप वाले शेल्फ पे रखी और आप उसको नीचे थर्ड शेल्फ में तलाश करते रहे, कितने दिन की तलाश के बाद आपको मिल जाएगी? किताब है ही नहीं। सो इट्स द सेम थिंग। सो पीपल अज्यूम wrong things. That's so they program themselves in the wrong way, assume there is something wrong with me, so I need to correct, I need to improve myself. You don't need to improve yourself, you are perfect. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, आपको बनाने वाले ने कंप्लीट बनाया था। He didn't make you incomplete. It's like, think about this, by the way. Those of you who have children, or even when you were a child, जब आपके वालिदैन आपको स्कूल भेजते थे या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, do you make sure that they have a tiffin and they have lunch money and they have proper dress and they have their books and their copies and then pen and pencil and scale and calculator and whatnot, everything? Do you do that? This is a yes no question. Do you do that if you send a child? Do parents generally do that? Yeah. And just think about this. कितनी देर के लिए बच्चा जा रहा होता है? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? जिसने मुझे आपको यहां भेजा, उसने, यानी हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं चंद घंटे के लिए, हम उसको सारी तैयारी कराकर भेजते हैं, उसको सब कुछ देते हैं। जिसने मुझे और आपको यहाँ भेजा, उसने हमें तैयार नहीं किया होगा, उसने हमारे साथ ऐसे ही भेज दिया, जाओ भाई 60 70 80 साल दुनिया में जाओ, ऐसे जी कर आ जाओ, फिर वापस आओगे ना, फिर तुम्हारे डंडे मार के तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। डू यू थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स? व्हाट डू यू थिंक? सो एनएलपी का एक प्रिंसिपल है, एंड दैट प्रिंसिपल इज that there is no such thing as an unresourceful person. It's only unresourceful states of mind and body. So every resource you need is already in you. The problem is कि आपकी उस तक एक्सेस नहीं होती। Just think about this, कि आपने बच्चे को तैयार करके भेजा, उसके बैग में सारा उसका टिफिन विफिन रखा था। अब जब बच्चा स्कूल गया तो चलने फिरने में, खेलने में, बैग हिला जुला या किताबें निकालने में, तो उसका जो टिफिन था उसकी किताबों के नीचे हो गया। अब जब ब्रेक का टाइम आया तो बच्चे ने बैग खोला, उसने देखा ही नहीं अम्मी ने या अब्बा ने वो टिफिन ही नहीं दिया आज, और इस वजह से बच्चा भूखा रह जाता है, not realizing that tiffin was always there in the bag, but deluding himself or herself into this idea that I don't have lunch today. Do you understand what I am saying? In exactly the same way, अल्लाह ताला ने जब हमें इस दुनिया में भेजा, हमारे अंदर हर चीज रखी है। हम इस दुनिया की हयातुल दुनिया मताउल गुरूर, हम इसमें धोखे में आते हैं, और धोखे में आने के बाद जो कुछ हमारे अंदर है, हम उसको देखने के बजाय, एंड वी फॉरगेट कि जो रास्ता हमने इख्तियार कर लिया था, जो रेसिपी हमने ले ली थी, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट। वी स्टार्ट डिल्यूडिंग एंड इट्स लाइक ओके जी, नफ्स का शैतान में ना तेरे साथ ही प्रॉब्लम है, देख तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर ये खराबी, तेरा ये कसूर, तू ऐसा तू ऐसा, rather than changing the direction that we are following, the path that we are following, and in NLP terms, the patterns of thinking and behavior that we are following. We start thinking that there is something wrong, inherently wrong in us. NLP enhances your awareness. Okay, and that's what NLP is about.
It gives you awareness about what you're doing here, what you're doing here, what you're doing here. So internally आप क्या कर रहे हैं, externally आप क्या कर रहे हैं, और इस internal और external में होने वाली जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, उसके रिजल्ट में आपको जो भी कुछ जिंदगी में नताइज आ रहे हैं, उनको तब्दील करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है. दिस इज नॉट समथिंग like programming your brain in a day. This is a way of living. This is a way of living your life with awareness. Now, does that mean once you do this, उसके बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी? No. Does that mean once you have learned NLP, there will be no problems in your life? No. Does that means when you have learned NLP, then you will, it's like बस बाहर निकलेंगे और ऊपर से आसमान से नोट टपकने लगेंगे? No. Does that mean that you will be successful in everything you do once you have learned NLP? No. But does that mean that you will have more awareness? Yes. Will you have more resourcefulness? Yes. Will you be able to, stand up when you fall down? Yes. Will you be able to make changes that you need to make? Yes. Will you live with more awareness? Yes. It's like इंसान में और जानवर में फर्क क्या होता है? मेरी अपनी राय में इंसान और जानवर में जो फर्क है, अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया है. हम सही गलत, हराम हलाल का हमें शऊर दिया है. माँ बहन बेटी का हम तमीज करते हैं. जानवर में ये शऊर, ये तमीज नहीं होता. Okay? So maybe animals dream. Okay? How do we know that they don't dream? And I know a lot of people who have told me that they don't dream. So does that mean if they're not dreaming, they are animals? No, it's sure. Living with consciousness, living with awareness. So मेरी language मेरे जहन पे क्या असर कर रही है? That's an awareness thing. मेरी language मेरे सुनने वालों के जहन पे क्या असर कर रही है? That's not just language. मेरी non-verbal, मेरे facial expressions, मेरी body language लोगों के ऊपर क्या असर कर रही है? मेरी body language मेरे अपने ऊपर क्या असर कर रही है? All of that. By the way, do you think knowing these things can be useful for you? It's a yes/no question. If I am seeing some yeses, I am seeing some thumbs up. And so do you think that this is something कि बस it's like एक बार कर लिया तो उसके बाद इसकी जरूरत नहीं होगी? यानी एक बात मुझे बताओ, मुसलमानों में तुमसे सवाल है, एक छोटा सा सवाल, क्या खाली कलमा पढ़ लिया एक बार काफी है, उसके बाद जरूरत है कुछ और करने की? कलमा पढ़ लिया यार, और क्या चाहिए? यानी कलमे से ज्यादा कोई पावरफुल कोई चीज है जी? इंसान के सारे गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ हो और उसने जमीन से आसमान तक, और वो एक साइड में रखा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे इसमें पढ़ने में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भारी होगा. ओके, तो खाली मैं एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना काफी हो जाएगा मेरे लिए? मुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी क्या मुझे? व्हाट डू यू थिंक? रोजा भी रखना पड़ेगा हर साल, सारी जिंदगी? मैं कलमा पढ़ लिया वो काफी नहीं होगा? मेरे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड कलमा रिसाइटर, काफी नहीं होगा? क्या ख्याल है आप लोगों का?
Yeah, practice, 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 practice. ईमान के बाद अल्लाह ताला भी हमसे क्या कहता है, अमले सौले. Okay? So, it's like my hope is that you get out of that misunderstanding, that delusion that you may have bought from some people. I don't know where you got those, if you had those, that delusion. कि it's like बस NLP की ट्रेनिंग कर लेना जो है वो सारी दुनिया के मसाइल का हल है. अगर ऐसा होता, ऑनेस्टली मैं आपको बैठा हुआ यहाँ पे सेशन नहीं करा रहा होता, मैं कहीं जाके मजे से जो है ना किसी पिकनिक कर रहा होता, क्योंकि मुझे तो NLP सीखे हुए 30 साल हो चुके. ओके, तो आए मेरी जिंदगी में ऐसे आराम से कहीं पे समंदर के किनारे पे यूं करके बैठा होता है, लाइक या किसी एयरपोर्ट पे बैठा होता, अपनी जहाज का इंतजार कर रहा होता. अब मेरा बिजनेस क्लास का टिकट होता मेरे पास, और मैं यूं करके हाथ में मेरे एक सिगार भी पीता, फिर तो मैं सुकून होता, फिर तो कोई परेशानी नहीं. अब तो NLP से हम सिगार के असरात भी खत्म करें, यूं करके मैं सिगरेट पी रहा था, हवा में यूं गोले बना रहा होता. मैंने तो NLP सीखी है भाई, मैं तो मास्टर ट्रेनर हूँ NLP का. Unfortunately, it doesn't work. It doesn't work that way. You have to make it work. So अक्सर लोग सवाल करते हैं, does NLP work? I tell them, no, it doesn't. You are the one who will make it work. अगर एक बात बताओ, आपने 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लिया. आजकल तो मैंने सुना है पाकिस्तान में छोटी मोटी गाड़ियां भी अब करोड़ों में जा रही हैं. So, but it's like, let's say you bought a Lexus or some really good car, your dream car. So, will that car take you to your destinations on its own? No, 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 no. Just think about this. There is nothing in this world who would work, do things on your own. You have, आप अभी कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इस वक्त हैं. Will your mobile just make calls for you on its own? ये मेरे पास तो जी बेहतरीन लैपटॉप है या बेहतरीन मोबाइल है. You are the one, you are the biggest variable who will make it work or not. So there are people who have taken NLP trainings. Even with me, there are people who have taken NLP trainings who have not implemented it, not practiced it. And then you know what they say? Either they say, नहीं जी कामरान साहब ने तो बहुत अच्छा कराया था, मेरे ही अंदर कोई खराबी है. They are thinking in the wrong direction. They're thinking in the wrong direction. It's not कि उनके अंदर खराबी है, वो तरीका जो इख्तियार किया है उसके अंदर खराबी है. They need to change that. And how do you do that? One step at a time. One step at a time. आपने सुना होगा ना, it's like, how do you eat an elephant? One bite at a time. That's how you do it. So the first thing, know your outcome. The second thing, based on your outcome, you take action and you notice कि जो आपके actions हैं, are they taking you closer to your goal, to your objective, to your results, or taking you away from your results? And you do it on a day-to-day basis. You do it on regular basis. एक कुक ने खाना रखा है पकने के लिए, और जो खाना रखा है उसमें लेट्स सपोज उसने गोश्त कुछ मुर्गी डाली है, तो जो कुक है वो उसको देखता रहता है, चेक करता रहता है चमचा लगा के कि गोश्त गल गया है या नहीं गल गया. अब इसमें घी डाला या तेल डाला या जो भी इसमें सब्जी डाली, तो he just keeps on looking, keeps monitoring. In just the same way, if whatever results you want to produce in your life, you need to keep noticing, am I getting the results that I want? Because abhi you are still in the process, you can make changes. So first करो कि कुक ने जब देखा कि उसने जो मसाला डाला था, नमक जो है वो कम है, so he can add or she can add.
अगर ज्यादा हो गया तो maybe he or she can do something ताकि उसके अंदर वो मसाले को adjust कर सके, because it is still in the process. In just the same way, आप अपने घर से निकलते हैं, आप अपने घर से फर्ज करो निकले अपने ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से निकले घर जाने के लिए, आपने एक रास्ता लिया, जब आप रास्ते पे चल रहे हैं, you keep on, after a while, जाहिर है आपको consciously you may not be doing it because it's part of you. It's like ingrained in you कि आप जब रास्ते में जा रहे हैं तो कभी आप सिग्नल कहाँ पे रुकना है, किधर टर्न करना है, it's already part of you. However, कभी आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि बारिश की वजह से ये वाला रोड बंद है, फलानी जगह पे इस वक्त धरना हो गया है, या कोई जुलूस गुजर रहा है, इस वजह से ये वाला रास्ता बंद है. Then what do you do? What do you do when something like that happens? Will you say छोड़ो लानत भेजो, कौन जाए घर, आज यहीं रहते हैं? What do you do? You change the way. That's right. You take an alternate route. Change the way. Yeah. So अब मेरा गोल है कि मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूं, मेरा गोल है कि मैं अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करूं, मेरा गोल है कि मैं अपनी फाइनेंसेस बेहतर करूं, मेरा गोल है कि मैं अपनी हेल्थ बेहतर करूं. सो वॉट एवर द गोल मे बी, बेसिकली इंसान की जिंदगी में 3 एरियाज होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स. Okay, so whatever the area of a person's concern may be, so whatever they say जी मेरा गोल ये है और मेरा मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, ये करना, now they start taking action. Sometimes when they are taking action, you have to see कि मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे छोड़ने की जरूरत है. Okay, so for example, somebody wants to reduce his or her weight, और उसके लिए वो जिम जा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, बट जितना वो एक्सरसाइज कर रहा है उसका डबल वो इनटेक ले रहा है. They'll not have, the exercise will not have any benefit. They'll not reach their goals. What do they need to do? They need to change. They need to stop doing what is harming them. Now, that is something which is not in people's awareness a lot of time, because बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी habitual हो गई होती हैं, यानी हमारे नेचुरल प्रोग्राम्स बन गए होते हैं. हमने किसी काम को इतना ज्यादा किया होता है कि वो हमारे जहन का, हमारी थिंकिंग का, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए होते हैं. That's when we may need someone else to point out, hey, listen, देखो तुम ये कर रहे हो, stop this. Because if you don't stop, you will not get the result you want. It's like कि हम रोड पे जा रहे हैं, हम एक रास्ता लिया हुआ है और हम समझ रहे हैं यही रास्ता जाएगा, एंड वो रास्ते के अंदर आगे कोई जुलूस है और बीच पे कोई हमें रोकता है, कोई पुलिस वाला कहता है जनाब रास्ता आगे बंद है, इधर से ना जाए. हम कहते हैं अरे नहीं यार छोड़ो, हम तो इधर से ही जाएंगे, ऐसे ही कह रहा है. और फर्ज करो कोई पुलिस वाला नहीं होता है, कोई हमें बताने वाला नहीं होता है, हम जाते ही रहते हैं. We will end up getting in, stuck. That's how people get stuck in their lives. So when somebody is telling them, or they need someone to tell them, but they don't have anyone to tell them, कभी कभी क्या होता है, it's like motivational speakers होते हैं, शाबाश तुम कर सकते हो, लगे रहो. Okay, no, it doesn't work that way. Not everybody can do everything. अभी एक पाकिस्तान के I'm not into sports, मैंने Facebook पे वो देखा था, this person who is जिसने 400 किलो का I think वो weightlifting में टाइटल लिया है. Now I can't even think of it. With all of my NLP, I can't even imagine lifting 400 kilos. I cannot do it. This is not a limitation of my thinking. It's a factual thing. मेरी physique, मेरी age, मेरी लिहाज से, that's an impossible thing. It would be stupid on my part if I think, oh नहीं मैं तो कर सकता हूँ. But if imagine if there is some motivational speaker says, whatever your mind can conceive and believe you can achieve. Napoleon Hill said that in his book. Okay, शाबाश तुम कर सकते हो, जाओ, keep it up. What will happen? So not everything is for everyone. Knowing what is true limitation for me and what is my perceived limitation, and identifying and differentiating between the two and overcoming both. If I can overcome this physical limitation, great. If I can't, great.
But if there is this, perceived limitation that I'm not overcoming, and I'm like, or a person is not overcoming and they're thinking that their limitation is right, they are going to harm themselves. They're going to harm people that, who love them because of their own perceived limitations. NLP helps us, किसी भी चीज के limitation को identify करने में, सबसे यानी overcome करने में सबसे पहली चीज तो you have to identify whether it exists or not, and then you overcome it. अगर हमें यही नहीं पता है कि लिमिटेशन है भी या नहीं है और हम खामाखाई में अज्यूम, वो कभी आपने देखा है, कभी कभी आप शाम के टाइम पे कहीं गली में जाएं, आपको दूर से वो एक बिल्ली बैठी हुई नजर आती है, कुत्ता बैठा हुआ नजर आता है, जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कचरे का थैला पड़ा हुआ था, कोई कागज का थैला पड़ा हुआ था. Have you ever had that kind of experience? आपने देखा कहीं कोई सांप है, कोई है, जब आप करीब गए तो पता चला वो डोरी थी, रस्सी पड़ी हुई थी. Okay, your mind created a delusion, so that's a distortion, because इंसान का जहन जो है वो मुसलसल चंद चीजें कर रहा होता है, वो चीजों को डिलीट कर रहा होता है, चीजों को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है, चीजों को जनरलाइज कर रहा होता है. सो कभी हमारे जहन ने चीजों को जो डिस्टॉर्ट किया है, उसने कभी हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को डिस्टॉर्ट किया हुआ होता है. दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स. इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, दिस इज हाउ इट डज थिंग्स. ओके, सो वो जो डिस्टॉर्शंस होती हैं, उन डिस्टॉर्शंस को हम अपने ऊपर रियल समझने लगते हैं, यानी वो जो रस्सी है हम उसको सांप समझ रहे हैं और उससे हम खौफजदा हो रहे हैं, जबकि उस वो इट्स अ हार्मलेस थिंग, लेकिन हमारा जहन उसको हमें सांप बना के दिखा रहा है. NLP gives you this awareness, this understanding that you can see things as they are in your life, personally, professionally, financially, in your health, in your relationships. And then when you can see what they really are, it gives you the ability to change that. Sometimes you don't even need to change anything. You just realize it's like rassi hai, isme mujhe change karne ki kya zarurat hai. Sometimes that realization, seeing the reality of things, does the thing for you. A lot of people never come to realization of what the truth is in their life, and they keep living in their imaginary world, in their hallucinations. मेरा 25 साल से ज्यादा मुझे लोगों के साथ काम करते हुए हो गए, I have come to this understanding that most people prefer to live in their delusions rather than facing realities. I don't know why, but that's my personal experience. But most people in this world live miserable, lives. Not many people really live good, happy, healthy lives. But that's a choice. And that's a choice that you can make, that I can make, by learning these things, by becoming more aware of what you're doing in your life and changing things. So if I keep going on इस तरह से, it's like मेरी जो NLP की practitioner training होती है, just the first level training होता है, that's like 70 hours of training. So I have this bad habit of speaking and speaking for hours and hours. I don't want to take a lot of time, but I hope जो कुछ अभी तक मैंने आपके साथ share किया, this adds some value to you. If it does, just give me a thumbs up or a yes, so I know. Okay. So I see thumbs up coming in my chat and some on the screen as well. Alhamdulillah, you're finding it beneficial. I see there are like 50 people and I don't see 50 thumbs up or 50 yeses, or, it's like, if it doesn't make sense, if you think there's like, I've just wasted your time, I'm sorry about that, but your time will not come back. I know you could have done something better rather than, spending time here with me, but the time is gone.
And so Iram says, your sessions always give me a new energy. Alhamdulillah. So if you have some questions, मेरे पास कुछ questions थे जो आप लोगों ने ही भेजे थे. Let me just quickly see if I can answer your questions. Now, I don't have answers to every question. Please don't assume that. If I can, I will answer your questions. ठीक है? So कुछ questions मेरे पास आए थे. How many exactly the techniques that are learned NLP practitioner training? मेरे ख्याल से आप पूछने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं जिन्होंने भी भेजा था कि NLP के अंदर कितनी टेक्निक्स हैं. If you're, as I said in the beginning, if you're thinking in terms of techniques, you're thinking in wrong direction. NLP की अलबत्ता, you know, if you want, जब NLP की जो टेक्निक्स जिस वक्त मैंने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की थी, this is like 1990, 99, 98, उस जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की थी मैंने, उस जमाने में जो टेक्निक्स होती थी तकरीबन आई थिंक अराउंड 70 के करीब टेक्निक्स थी NLP में. एंड अब जहां तक मैं समझता हूँ प्रॉब्ली 450-500 मे बी उससे ज्यादा टेक्निक्स हो. इट्स नॉट अबाउट टेक्निक्स. ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि जी आप किसी फार्मेसी में जाए, आप बोलेंगे दवाएं कितनी है, किस चीज की दवा. फार्मेसी पूरी दवाओं से भरी हुई है. सर के दर्द की, किस किस्म के सर के दर्द की, सर के दर्द की वैरायटी भी अलग होती है, हर एक के सर के दर्द भी अलग होता है, उसकी वजूहात भी अलग होती हैं. सो इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स, you are thinking in wrong direction. Stop that. Okay. NLP is not a set of techniques. Richard Bandler, जो NLP co-founder है, he says NLP is an attitude. So it's an attitude of curiosity about knowing how things work, how people work, how people do what they do. So if you are, you know, doing something, or if you see someone doing or producing a certain result, you see how does that person do it, and how can I create that? Okay, so using what technique NLP maybe treat depression? Seriously, I'm reading questions जो मेरे पास आए थे आप, और मैं exactly जैसे अंग्रेजी लिखे हुए वैसे ही पढ़ रहा हूँ. Okay. किसका डिप्रेशन, किस किस्म का डिप्रेशन? And how do you know the person has depression जिसका आप क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं? Like just assuming on your own कि मुझे डिप्रेशन है, you know, it's like आज सुबह की आपको, आज सुबह फजर की नमाज के बाद मैं, it's like अपने बेटे के साथ थोड़ा सा हम लोग जिम जाते हैं, तो जिम में आज एक्सरसाइज करा था, and I felt कि मुझे कोई 20-25 मिनट हो गए थे एक्सरसाइज करते हुए. एंड जनरली होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू फील लाइक अ pump up and you feel good, but I was like, okay. And so should I look for some kind of depression का इलाज की मुझे जरूरत है, और could it mean कि मैं रात को देर से सो रहा हूँ आजकल, तो मेरी नींद पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही है, so I need to take a little sleep. डिप्रेशन का इलाज NLP के मेरी बाय द वे एक YouTube चैनल पे मेरे एक वीडियो है, यू आर नॉट डिप्रेस्ड, स्टॉप इट, इस टाइटल से, गो चेक दैट. ओके. हाउ कैन द सक्सेस बी पॉसिबल बाय अप्लाइंग NLP टेक्निक टू one's life? I hope I give you that answer in today's session. Up until now, how many of the population to whom NLP was implemented have been cured or successfully deprogrammed? Well, अगर आप टीवी देखते हैं, you have been deprogrammed many times. Okay, and everyone who's watching TV is being deprogrammed. That's how it works. Effects of language on brain, on behavior. So you see, it's like depending on आप कौन सा channel देख रहे हैं,
you will find they're constantly programming your brain with certain ideas, certain suggestions, certain narratives. They're constantly implanting those things in your head. And you're buying those ideas, you're accepting those things. It's like hypnosis. I've been a student of hypnosis since 1983. I've been teaching since 1997, but I'm a student. I've been learning hypnosis since 1983. सो मेरी डेफिनेशन जो हिप्नोसिस की है वो सिंपली ये है, हर वो चीज जो मैंने और आपने बगैर सवाल की एक्सेप्ट की वो हिप्नोसिस है। हर वो बात, हर वो आइडिया, हर वो नोशन, हर वो चीज that you and I have accepted without questioning is hypnosis. Everything. So हर वो चीज जो आप टीवी पे देख रहे हैं, वो सियासी बयानात हो, वो खबरें हो, वो ड्रामे हो, वो फिल्में हो, वो व्हाट्सएप पे आने वाली वीडियोस हो, स्किट्स हो, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके मूड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको मुतासिर कर रहे हैं, वो एड्स हो, they are programming your brain, they are shifting your thinking in a certain direction. That's neuro linguistic programming. Everyone is being deprogrammed. Then how many chances are there to get cured of deprogrammed applying NLP techniques to one's life in percentage? I'm sorry, इंसान की जो कैफियत होती है उनको परसेंटेज के अंदर नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, और ना ही इसको सिर्फ कोई स्टडी मेरे इल्म में है कि जिसके अंदर इस तरह की चीज हो तो मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। अच्छा जनाब, फिर एक मेरे पास है, सर कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन के लिए अक्सर कहा जाता है वो सिचुएशन याद करें जब आपने अच्छा परफॉर्म किया हो या मोटिवेटेड हो, अगर याद ना हो या उस वक्त कौन कौन था सही याद ना हो, या बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, दरमियानी हो, फिर क्या किया जाए, उसी पे इक्तिफा किया जाए। What's the big deal about that? Okay. So it's like, अगर आपके पास 1,000 रुपए, okay, तो आप 1,000 रुपए पे इक्तिफा करेंगे ना। so अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप 50 पे इक्तिफा कर लें। Okay. So what's the big deal? And then you move on wherever you are, you move on from there. Okay. अच्छा जनाब, then here is my question. Number 1, in day-to-day life, what benefit one can get? I hope you got that answer. What's the difference between NLP and hypnosis? NLP is an advanced form of hypnosis, and hypnosis basically looks into like I have answer to this question, by the way. The best person to answer this question is the one who created NLP, and that's Dr. Richard Bandler. If you go to my YouTube channel, I asked him this question because this is one of the very frequently asked questions. So I asked Dr. Bandler this question. You can check his reply on my YouTube channel, and you will find the difference between hypnosis and NLP. Okay, because he's the one who created it. I didn't create NLP, he did. So check that. लेकिन सिंपली ये मैं आपको बता दूं, NLP is an advanced form of hypnosis. Okay. How is practical? Hypno master grab mind and instruct hypno people to follow. I don't know where you get that from. Notice I have not grabbed your mind yet, so you can follow what I am saying. Notice I am still trying to grab your mind, but I am unable to. Can I please help me grab your mind? Where do you get these things from? How in a moment people goes into a state of hypnosis every single time when your mind has accepted anything. So the idea that you can grab people's mind, if you have learned it somewhere, you didn't question it, you read a book, you saw a movie and you accepted it. Many years ago मेरे पास 2 ख्वातीन आई, तो उन्होंने कहने लगी, सर वो वाला हिप्नोसिस होता है ना जिसमें यूं करके माजी में ले जाते हैं,
वो वाला हिप्नोसिस सीखना है हमने. ओके, दैट्स अ टेक्निक इन हिप्नोसिस, एज रिग्रेशन कहलाती है. एंड देन उससे भी ज्यादा उन्होंने कहा, और वो जो होता है ना जो पिछले जन्म में ले जाते हैं, वो वाला चाहिए. मैंने कहा बीबी देखिए, ये चीजें जो है ना ये फिल्मों में होती हैं. उन्होंने, अच्छा ये मैंने उनसे पूछा, ये आपने कहा, आपको कैसे पता चला? उन्होंने बताया उस जमाने में सोनी पे कोई ड्रामा था, कोई जासूसी, आई डोंट रिमेम्बर, कोई जासूसी कोई ड्रामा था, बहुत साल पहले की बात है. उस जमाने में लाइक सोनी हमारे पाकिस्तान में आया आया करता था. एंड इज इट कि जो वो सोनी पे वो ड्रामा आता है वो जासूस उसके अंदर दिखाया है. तो मैंने कहा बीबी डू यू रियलाइज कोई ड्रामा है? एंड देन नहीं सर, होता है जब भी तो दिखाते हैं. मैंने कहा आप बात तो सही कह रही हैं, सुपरमैन होगा हवा में उड़ता होगा जब भी तो दिखाते हैं फिल्मों में. हवाई जहाज को उड़ते हुए रोक लेता है, ट्रेन को चलती हुई रोक लेता है, सचमुच होगा जब भी तो बनाई उन्होंने फिल्म, ऐसे तो नहीं हो सकता. Anything you have accepted without questioning is hypnosis. You've been hypnotized by those, novelists, and into believing this kind of crap. It's like अगला स्टेप क्या होता है? देखो होता है क्या है, जब हमने इस किस्म के गलत ख्यालात को एक्सेप्ट कर लिया होता है, अगली चीज होती है हम उसकी तलाश में निकल जाते हैं, हम वो चीजें सीखने की. इसमें एक बात आपको बताऊं, मेरा पिछले 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस जिंदगी का इस फील्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ ट्रेनर, आई हैव सीन काउंटलेस पीपल जो इन गलत फहमियों की वजह से इतने डेस्परेट होते हैं, वो दे एंड अप लूजिंग एवरीथिंग, बिलीविंग कि किसी किस्म का कोई सुपर नेचुरल पावर. ये जो बाबों के पास लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिकॉज दे हैव दिस बिलीफ कि जो बाबा जी है, वो जो उनका गुरु है, उसके पास कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर है जिसके जरिए वो सब कुछ ठीक कर देगा. इट डजंट वर्क दैट वे. आप अपने साथ, अपने घर वालों के साथ जुल्म करेंगे अगर इन चक्रों में पड़ गए. मैं आपको खाली एडवाइस कर सकता हूँ, मैं रोक नहीं, मैं आपके ब्रेन को ग्रैब करके उसको रोक नहीं सकता इन किस्म की हरकतों से. काश मैं आपके ब्रेन को यूं करके ग्रैब करके और उसको यूं रोक सकता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है. मैं आपको खाली एक सेंसिबल बात बता सकता हूँ, और उसको फॉलो करें या ना करें, आपकी अपनी चॉइस होगी. How in a moment people goes into state, I think I answered that. So anytime you're basically focused on a single thing, your mind goes in hypnosis. मेरी जो practitioner training होती है उसमें you learn hypnosis as well. Okay, it's part of the practitioner training. How it is practical hypno master, अच्छा ये तो हो गया. Well, what is the impact in life, health and wealth wise of NLP? No impact. Okay, eat good, do exercise, that will have impact. Okay, and for your wealth, learn whatever you want to do and then work hard. Okay, आप एक चीज सोचिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो इस किस्म की बातें करते हैं, थिंक लाइक बस दिमाग को प्रोग्राम कर दो. आपने ये देखा है कभी, वो जो दिमाग को प्रोग्राम करके वेल्थ कमाने की बातें करते हैं, हाउ मच एडवर्टाइजमेंट दे हैव टू डू टू सेल देयर प्रोग्राम्स? दैट्स वर्क दैट दे आर डूइंग. अगर दिमाग को आपके प्रोग्राम करके पैसे टपाटप कमाने की, अट्रैक्ट करने की वो होती है उनके पास कोई तरकीबें, तो वो आंखें बंद करके यूं बैठे होते और उनके पास पैसे अट्रैक्ट हो रहे होते. वो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और वेबिनार्स और इट्स लाइक कोर्सेज करके और एडवर्टाइज करके आपसे पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहे होते. वो टीवी पर आके टेक्निक्स बेचने की कोशिश नहीं कर रहे होते. डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू रियलाइज दिस? क्या हुआ, सब लोग सो गए क्या? So then I have a question, and that is where one can utilize this method and forward. I hope I answered that question. Why we should learn NLP? You don't have to. It's a choice.
It's like, why should I learn Japanese? Do I have to learn Japanese? Do I have to learn Arabic? If I want to, yes. If I want to understand Quran, if I want to understand, hadith of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, then it's better that I learn Arabic. But do I have to? If I want to understand my deen better, that's a good thing to know. But do I have to do it? Can I not be a good Muslim if I don't learn in Arabic? So a person can be very successful without any of these trainings. A person can be very, very successful without knowing anything, without going through any such trainings. But people who are not successful, they can always learn and then apply these things in their life. And then it's not about learning, it's about application of what you learn. That makes the difference. आपने सुना होगा ना, अमल से ही बनती है जन्नत भी जहन्नम भी. It's about applying, it's about application. So मेरी जो trainings होती हैं, उन trainings में हमारा, जैसे जो मेरी 70 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है, 70 घंटे की ट्रेनिंग में तकरीबन पहले 60 से 62 घंटे, 63 घंटे, like 62-63 hours, you learn skills, not techniques. You learn skills. You learn the attitude. Richard Bandler, जो NLP, the co-founder, he says NLP is an attitude. So the first thing you learn is that attitude. If you don't have the right attitude, with wrong attitude, the best techniques will not work. So you learn that attitude. You learn that skill set. और मेरी जो ट्रेनिंग होती है उसके बिल्कुल आखिर में जो टेक्निक्स होती है ना, वो 5 मिनट 10 मिनट के सेक्शंस होते हैं, लाइक छोटे सेक्शन होते हैं. वो जी स्विश टेक्निक, वो जी फलाने साहब ने स्विश टेक्निक बताई थी. स्विश टेक्निक इज हार्डली 10 मिनट की चीज. 70 घंटे की ट्रेनिंग में 10 मिनट की चीज है स्विश टेक्निक. बट पीपल स्टिल आस्क मी, सिर्फ टेक्निक बता दें मुझे. इट्स नॉट अबाउट टेक्निक. वुड यू गो टू अ सर्जन एंड से कि जी मुझे ऑपरेट करने की टेक्निक बता दें? जी पहले छुरी पकड़ना सीखिए, आपके हाथ ना कांप रहे हो, जिसको आपने लिटाया हुआ है पलंग पे उसको एनेस्थीसिया भी लगा हुआ हो, आपको मालूम है कहाँ से कटना है, कितना कटना. नहीं, ये सब छोड़ें, आप मुझे बस ऑपरेशन सिखा दीजिए. Would you do that? Okay. So it's like, नहीं, ऑपरेशन की टेक्निक बता दीजिए. It's not in the techniques. So techniques, they're a very small part of NLP practitioner training. Okay. There are literally millions of people around the world who have been, have learned this. And I know a lot of people have not used it. A lot of people, it's like a lot of people learn things and never practice those things. And then they do, either they say this thing doesn't work, or they say there is something wrong with me. And both of these are wrong conclusions. It doesn't work, nahi. I didn't make it work. That's the right thing. And it's not that there is something wrong with me, it's that I didn't do the right things I needed to do. So I'm not, you are a perfectly normal, healthy human being. There is nothing wrong with you. It's just that you're thinking in the wrong direction. That's what you need to change. So NLP में a lot of times I see a lot of people go into with this idea कि जी मैंने it's like NLP की techniques सीखने और मेरे पास certificates की, I don't know. Do you realize this, by the way? हमारे पाकिस्तान एयरलाइन के अंदर PIE के अंदर पायलट्स थे, पायलट्स. ओके, सर्टिफाइड थे वो भी. It's not certificates. सर्टिफिकेट तो चीटिंग से भी मिल जाते हैं, डिग्रियां तो चीटिंग से भी मिल जाती हैं. It's the skill. अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मगर आपके पास स्किल नहीं है, you'll not be able to do anything.
वो सर्टिफिकेट आपका सोशल मीडिया पे आपकी ईगो को शायद सेटिस्फाई करने के लिए किसी काम आ सके, बट प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में किसी काम नहीं आएगा. If you really want to get some results in your life, that requires practice, diligent practice, lot of practice, consistent practice. उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है. आपके इल्म में हो तो मुझे बताइएगा, आपको पता चले तो मुझे बताइएगा. I will become your student. I promise you, if you know something and you can prove कि बगैर प्रैक्टिस के ये सब हो जाता है, I will be your first student. Just let me know. Prove to me that you can do that. इस किस्म की गलत फहमियों में अपनी जिंदगियां बर्बाद ना कीजिए. That doesn't help. किसी का उसमें फायदा नहीं होता. इंसान अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर सकता है, उससे उसको हासिल कुछ नहीं होता. Now NLP की जो नेक्स्ट लेवल होता है ट्रेनिंग का, it's called NLP Master Practitioner Certification Training. So Master Practitioner is an advanced level of training. As I said, practitioner, it's the basic level of training, and Master Practitioner is the advanced level. Master Practitioner is someone who has mastered practitioner level skills. So if you have this question, how you can learn this, there are a number of possibilities. Okay. It is an investment of time. It is an investment of money. It requires commitment. Okay. Over years. Let me just see if I can. ये जो मैंने अभी बैकग्राउंड लगाया है, ये मेरा पाकिस्तान में जो मेरी क्लासरूम है, ये उसका मैंने background. This is my classroom. Those of you who have attended my classes here, you know this room. Okay, so and these are certificates of some of the certificates of different courses which I've attended over years. These are not all the certificates. These are some of the certificates. I've attended many courses जिसका मेरे पास कोई certificate नहीं है. एक प्रोग्राम मैंने कल कंप्लीट किया, just yesterday. कल इस टाइम पे I was attending a class as a student. Okay, and I finished that. Because for me, learning is a never-ending process. It's a never-ending process. It's a constant. Many years ago, I met एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई. He was कराची में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, and वो जो जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उनकी ऑफिस में, लाइक उनकी प्रैक्टिस में, उनकी क्लिनिक में शाम में बकौल उनके 150 से 200 पेशेंट्स आते थे हर रोज. एंड ही वाज ये 19 यानी 50s के ग्रेजुएट थे वो. मेरी जब मुलाकात हुई उनसे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रफली अराउंड 27-28 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ. तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे उस वक्त. ही वाज अराउंड 77 years old. वो डॉक्टर साहब जो थे, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि कामरान, मैं आज भी किताबें भी पढ़ता हूँ, मेरी फील्ड से रिलेटेड जो सेमिनार्स होते हैं मैं वो भी अटेंड करता हूँ, वर्कशॉप्स होते हैं वो भी अटेंड करता हूँ, एंड मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ. 77 साल के डॉक्टर साहब थे. जो किसी फील्ड का कोई मास्टर होता है, किसी फील्ड में मास्टर बनता है, वो नहीं होता उसने उस फील्ड के लाइक एक डिग्री ली थी. वो एक हमारी माइंडसेट वो होता है जो हम देखते हैं. पुरानी आपने अगर कभी देखी हो, मोहम्मद अली की फिल्में हुआ करती थी, हमने अपने बचपन में देखी थी. मोहम्मद अली जो थे वो 40 साल की उम्र में फिल्म के अंदर 18 साल के नौजवान बने हुए होते थे. और ये माँ, मैंने बीए कर लिया, तू मशीन भेज दे. बीए कर लिया ना उसने, बस खत्म हो गई उसकी तालीम, मुकम्मल हो गई. ओ भाई, किस दुनिया में रह रहे हो? बीए करके क्लर्क लग सकते हो. ओके, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट. सो it's a never ending process. So it's not about certificates. It's if even if you have taken any training,
Please don't limit yourself with that idea. Oh, I have a certificate. I keep on learning, and Alhamdulillah, it's like I invest a lot on myself, on my own education, on my own learning. I keep investing a lot, and Alhamdulillah, I can invest a lot. And Alhamdulillah, I have, not because I have, so I invest, but it's the other way around. I invested on myself. As a result, Alhamdulillah, I have something that I can invest even more. Do you understand? मेरी जिंदगी का एक दौर ऐसा था कि मेरे पास 200 रुपए नहीं होते थे. मुझे किताब खरीदनी होती थी तो मैं पैसे बचा बचा के 200 रुपए की किताब खरीदता था, लेकिन मैं किताब पे इन्वेस्ट करता था. और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा वक्त भी अल्लाह ताला ने दिखाया कि एक एक वक्त में $5,000 की इन्वेस्टमेंट भी की है, 4 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग के ऊपर. मगर क्योंकि पहले की थी इन्वेस्टमेंट, अल्लाह ताला ने तो उसके रिजल्ट में कुछ दिया ताकि फर्दर इन्वेस्ट कर सके. मैं यहाँ पर बहुत लोगों का एक माइंडसेट देखता हूँ, जैसे जब होंगे ना तब इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जब मेरी तबीयत सही होगी ना तब मैं दवा खाऊंगा. ओके, आजकल मैं बहुत बीमार हूँ जी, आजकल मैं दवा खाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बहुत तबीयत खराब है. ओके, ऐसे से पता नहीं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, या मेरी किस्मत खराब है, या दवा खराब है. ना भाई, ना आपकी किस्मत खराब है ना दवा खराब है, आपकी हरकतें खराब है, उनको ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा. ओके, सो I see a couple of questions. Let me just quickly check these. What book you are reading nowadays? Luqman, I'm reading number of different books. मेरी पीछे यहाँ पर रखी हुई है. I'm reading book Adab al-Mufarrad, and this is a book by Imam Bukhari, and it has about 1,300 ahadith, and I'm going through a program on that. And I'm also reading Ihya Ulum by Imam Ghazali, and that's another book that I'm reading these days. In addition to that, there are several other books open on my Kindle which I'm reading. So I keep reading. It's like I'm addicted to reading. Okay, जैसे किसी को नशा हो जाता है ना किसी चीज का, मुझे नशा है सीखने का, मुझे नशा है पढ़ने का, मुझे that's my nasha. So if I don't do it, I feel there's something missing. So it's like अगर आप मेरी गाड़ी में बैठे हो, you'll be listening to something. मैंने सिर्फ गाड़ी में मेरे ख्याल से हजारों घंटे की मैंने ऑडियोज जो है गाड़ी में सुनी. अच्छा जनाब, so let me see, sir, what I have learned from you that knowledge plus understanding plus application will complete the equation of balancing of life. Well, it's the beginning, Lubna. I wouldn't say it completes the equation. Okay, but these are the ingredients. Okay. And with that, things become easier, life becomes easier. देखो, मैं एक चीज ही कहता हूँ, अपने बच्चों को भी ये चीज सिखाता हूँ कि हमने तकरीबन अभी बच्चों के यहाँ पे समर वेकेशन हुई, यहाँ पे समर वेकेशन थोड़ा देर से स्टार्ट होती है पाकिस्तान के मुकाबले में, और अगले महीने तक अभी है इनके, तो छुट्टियां हैं स्कूल की. तो बेटे ने के साथ मैं जिम जाना शुरू किया. तो मैं जब शुरू में गए तो जो ना वो हल्का सा 1 पाउंड 2 पाउंड वाले जो वेट्स होते हैं उससे वो उठाना शुरू किया. उसको 5 पाउंड वाला उसको खासा हैवी लगता था, लेकिन माशाल्लाह एक्सरसाइज करते करते नाउ ही इज ग्रोइंग, हिज मसल्स आर ग्रोइंग, ही इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर. सब वो 5 पाउंड से शुरू करता है. ओके, एंड 10 पाउंड 15 पाउंड, ही कैन डू दैट. जो वजन था ना 1 महीने पहले, वो तब भी उतना ही था, लेकिन आज माशाल्लाह he has grown stronger. This is exactly how you work on problems in life. You don't work on problems, you work on yourself. आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप बड़े होते हैं, आप स्ट्रांग होते हैं, जिंदगी के मसाइल छोटे होने लगते हैं ना. इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको मसाइल नहीं आते, अब आपको डिफरेंट लेवल के मसाइल आते. अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. सो जो इट्स लाइक जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, आजमाइश डिफरेंट लेवल की आती रहेगी. आजमाइश खत्म नहीं होती है. आजमाइश का इट्स लाइक क्लास 1 के बच्चे का टेस्ट अलग होगा, क्लास 10th का अलग होगा, मास्टर्स का अलग होगा.
तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो टेस्ट की नौयत बदलती जाएगी, टेस्ट होगा ज़्यादा, बट उसी प्रोसेस में आप ग्रो करते हैं, उसी प्रोसेस में आप बेहतर होते हैं. सो लेट्स सी, can NLP be learned online or you should attend on-site classes? You can learn NLP. अब मेरे जो NLP के home study courses हैं, you can learn. There are people here इस वक्त यहाँ पर who are already learning मेरे जो home study courses हैं उससे, and there are many people who are learning this. देखो, you learn concepts and then you apply them. होता क्या है, मेरी अपनी आपको एक हार्ड लक मैं कहूँगा वो ये रही कि जिस जमाने में मैंने शुरू किया, मेरा कोई मेंटर नहीं था जिससे मैं डायरेक्टली रेगुलर बेसिस पे इन टच रहता. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्रायल एंड एरर से करनी पड़ी, मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्रायल एंड एरर से सीखनी पड़ी. सेकेंडली, मैंने जो चीज़ें करी थी, जब मैंने लाइक मैं इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में जाके मैंने ट्रेनिंग करी एंड देन मैंने जितनी किताबें पढ़ी अंग्रेज़ों की, मैंने इनकी ऑडियोज़ देखी. मेरे पास, अगर आप ऑफिस में आए तो मेरे पास 700 से ज़्यादा ऑडियोज़ वीडियोज़ का कलेक्शन है. इट्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आई रेड, एंड आई अप्लाइड देम ऑन माई ओन वे. और हुआ ये कि जब मैं चीज़ें करता था तो शुरू शुरू में लोग मुझे, जी अमेरिका में होता है, ये जापान में होता है, ये इंग्लैंड में होता है, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता. एंड देन मैंने चीज़ों को अपने हमारे कल्चर के साथ, हमारे रिलीजन के साथ मैंने चीज़ों को अलाइन करना शुरू किया. इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, इट्स लाइक हमारे रिलीजन को समझने में, हमारी बेसिक्स को, हमारे कल्चर को समझने, हमारे माइंडसेट को समझने में, हमारे और इनके माइंडसेट में. मैं यहाँ वेस्ट में अब रहता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ. मिसाल के तौर पे हमारे माशरे में जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, जो फैमिली का सिस्टम है, जो यहाँ पर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. ओके, हमारे यहाँ आप देखेंगे बच्चा 35 साल का होगा, निकम्मा होगा, निखट्टू होगा, कुछ नहीं करता होगा. ओके, उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी होंगे, और उसका बाप, उसका बड़ा भाई उसको सपोर्ट करेगा. बाप ये, तू परेशान नहीं होता है, मैं हूं ना, तेरा बाप है, तुझे क्या जरूरत है परेशान होने की. यहाँ पर क्या होता है, बच्चा 14 साल, 16 साल, 17 साल का होता है, माँ बाप उससे कहते हैं बेटा जाओ. इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस. सो मैंने जो जब सीखा तो मैंने उन चीज़ों को कस्टमाइज करना शुरू किया हमारे कल्चर, हमारे बिलीफ सिस्टम के लिहाज से. सो मेरी जो एनएलपी के प्रोग्राम्स हैं वो इवॉल्व हुए ओवर मेनी मेनी years. मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो कराई है अभी तक, आई थिंक अराउंड 91-92 टाइम्स मैंने कराई है. ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं है. okay? लेकिन मैं एक रफ एक आपको बता रहा हूँ. सो इतनी बार वो चीजें करा करा के वो चीजें ना, इट्स लाइक पार्ट ऑफ मी. आई everything I see is through those frames. It's like it's part of me. जब आप कोई काम इतनी बार कर रहे होते हैं, repeatedly कर रहे हैं, तो a time comes when it becomes natural to you. Okay, so it has been my experience. तो मेरे जो कोर्सेज हैं, मेरे जो होम स्टडी कोर्सेज हैं, मैं उसमें भी एक चीज़ ये करता हूँ कि आई गिव पीपल ग्रुप कोचिंग सेशंस, वीकली ग्रुप कोचिंग सेशंस. सो इट्स नॉट कि खाली वो होम स्टडी कोर्स है. So it is a home study course. You are learning at your home, yet you get weekly interaction with me. Plus मेरे आज WhatsApp की वजह से और ज़्यादा आसानी हो गई है. I have WhatsApp group जिसमें मैं जो भी लोग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं मैं उनको ऐड करता रहता हूँ. So when you sign up for my home study course, for example, I will add you to that group. Now उस ग्रुप में होने की वजह से you can stay in touch with me and you can ask me any question. I being your coach, your mentor, your trainer, I answer those questions as frequently as I can. Okay, so home study course का जो advantage होता है वो ये होता है कि you learn at your own pace, की cost कम होती है. That's another thing. So आपने अपने बताया था आपने एक बुक परचेज की थी, उस बुक का नाम बताएं. मैंने एक नहीं मेरे भाई, मैंने हजारों किताबें परचेज की हैं. Okay. How can we develop NLP attitude? Learn it. Come join my training. You will learn it. It's that simple. This is how you learn it. ऊपर से नहीं टपकता, कोई इंस्टॉल नहीं करता.
You are sum total of people that you move with. जिन लोगों के साथ आप एसोसिएट होते हैं, इट्स लाइक आपने वो हदीस सुनी होगी ना कि एक शख्स था जिसने 100 कत्ल किए थे, तो उसको एक आलिम ने मशवरा दिया कि जाओ ऐसी जगहों पे जाओ, दूसरे इलाके में जहाँ नेक लोग हैं, ताकि उन लोगों के साथ उनकी सोबत इख्तियार करोगे तो उनके तरीके तुम्हारे अंदर, उनकी नेकी तुम्हारे अंदर डेवलप होगी। सो आप कोई भी चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आते हैं, तो उन लोगों के साथ एसोसिएट, जिन लोगों के साथ आप एसोसिएट होंगे, आप उनकी चीज़ें अपने अंदर लाने। सो यू वांट टू लर्न एटीट्यूड, एनएलपी एटीट्यूड, कम जॉइन माय कोर्स, get associated, you'll learn that, no problem. Okay, will it happen in a day? Will I like program your brain? No. Okay, it takes a little while. Okay, first I may have to empty यहाँ पे जो चल रहा है, and I may have to stop you from doing a number of things that you may be doing. I have to point you, pinch you, poke you, make you feel uncomfortable with my answers, but you will learn that. It will happen. It takes time. You will learn that. अच्छा, देन और अल्लाह हमें स्टेप बाय स्टेप तैयार कर रहा होता है। या एग्जैक्टली सर, ये टेक्निक या तजुर्बे और मुशाहिदे से बनती है? टेक्निक एनएलपी एक एस्टैब्लिश्ड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उन चीज़ों को आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके अंदर रिफाइनमेंट आते चले जाते हैं। ओके, सो टेक्निक्स जो है वो बहुत स्मॉल चीज़ है। आई डोंट नो, लाइक मेरा जहन जो है टेक्निक के लफ्ज़ को बिल्कुल मुख्तलिफ शायद समझता है, जिस तरह से लोग समझते हैं कोई कोई जादुई चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देन कैन एनएलपी be learned online? अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको। Is there any other question? So Iram says, I can say it's transformation for me, alhamdulillah. So those of you who may be interested in learning, okay, let me just quickly show you how you can do that if you're interested. Okay, I have my NLP practitioner certification training coming up, and probably this will be the last time I'll conduct a practitioner course, a practitioner certification training, because I'm making some changes in my work and things that I do. So, but मैंने announce कर दिया था, so some people signed up, so I just thought, okay, I'll go ahead with this program. So I conduct NLP practitioner and master practitioner training together. यानी कि practitioner और master practitioner के students साथ होते हैं. And as I said, master practitioner is about mastering practitioner level students. तो इसमें होता यूं है format में कि ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइजेस होती हैं, यू लर्न स्किल्स। सो जैसे जूम में आपने देखा होगा कि रूम्स में चले जाते हैं, तो जो प्रैक्टिशनर वाले होते हैं वो अपने एक्सरसाइजेस के लिए चले जाते हैं, मास्टर प्रैक्टिशनर वाले जो हैं वो एडवांस मटेरियल मेरे साथ सीखते रहते हैं। That's how we do. So I'll quickly share this. This is my website, first-institute.com. If you go here, यहाँ पर you can find all the details about my courses. आपको स्क्रीन पे प्रॉब्ली जो नजर आए, दिस इज मेरी एक पुरानी क्लास की पिक्चर्स हैं ये। दिस इज माय क्लासरूम, एंड सो इस पे जो लर्निंग के ऑप्शंस हैं आपको, मैं वो दिखाना चाह रहा था आपके लिए। सो नाउ आई हैव दिस इज माय एनएलपी होम स्टडी कोर्स। ओके, ये जो न्यू एनएलपी होम स्टडी कोर्स है, ये बेसिकली मेरी एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग है। ओके, और then advanced NLP home study course, NLP master practitioner training की recording है. And then this is my NLP practitioner certification training, which I will be conducting from September 6th. Okay, so आप अगर इस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो you will find इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ आ जाएंगी। So NLP क्या होता है? अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसमें you will what you will learn, you will find all of these details here. इसको पढ़ लीजिएगा। देखो, कभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ चीज सीखना चाहते हैं, बट उन्होंने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं होता। I want people to make informed decisions. जब आप informed decision लेंगे, you will not get into in the wrong direction. Stay with me. There is something I want to give you. So
what is covered in this practitioner training? This is what is covered. ये जो practitioner training है, इसमें मेरा जो NLP home study course है, okay, this course, which is $497 का program है, I give this course as a bonus, free of cost, okay. So ये program, इसकी ये देखिए आपको जो कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें इस प्रोग्राम में आपको एज अ बोनस यहाँ पर मिलते हैं। सो होता क्या है कि जब आप क्लास पे आएंगे, अब आप देखिए इसकी देयर आर 21 सेशंस, और इसके अंदर सेशंस में ये जो है ना, ये टेक्निक वाला एनएलपी पैटर्न्स आप देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि एनएलपी के लास्ट में टेक्निक्स होती हैं, बिल्कुल। सो ये जो टेक्निक्स आप देखिए, ये 2 सेशन है, सेशन 20 एंड 21, दिस इज अबाउट टेक्निक्स। इससे पहले जो 19 सेशंस हैं, और ये हर सेशन जो है तकरीबन 3-3.5 घंटे का है। ये जो 19 सेशंस हैं, these are all skills. That's all about developing skills. Okay, because जब आपके पास ये skills होती है, you learn hypnosis in that, you learn anchoring, you know hypnosis के हमारे पास 2 सेशंस हैं, then Milton model, meta model, these are all like communication models इसके अंदर। You learn all of this. By the way, इस पे आप आएंगे, अगर if you want to see इसमें क्या है, तो you can click on this and then you will see इसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मगर इसके 19 सेशंस जो हैं, these are skills building sessions, and last 2 सेशंस जो हैं, they are about techniques. And then people ask me, जी मुझे टेक्निक बता दें। और आप अगर इसमें भी देखेंगे ना, ये टेक्निक्स जो हैं, देखिए ये डिस्टेंस बेस्ड स्विच, फिर ड्रेस अप योर एटीट्यूड, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। Visual squash, changing timelines, new behavior generator, these are like small things, little things, छोटे छोटे segments हैं ये ट्रेनिंग के। And people think this is what NLP is. No, that's a mistake. You know, so when you learn, here are certain things. I can guarantee you that what you learn with me will be spiritually aligned with, it will be aligned with our Islamic values, with our culture, with our understanding, and alhamdulillah, it will be a deep experience for you. Alhamdulillah, I'm the most experienced person in this field in Pakistan. I don't have to claim anything about this, okay? And alhamdulillah, इसके अंदर जो आपको certificate होता है, it's like जो मेरे courses होते हैं, they are licensed by Society of NLP, जो NLP की असल original certifying body है, which was started by Dr. Richard Bandler and John Rinder, the co-founders of NLP. So your courses are, you get certificates from Dr. Richard Bandler, and it's signed by Dr. Richard Bandler and Society of NLP. So how it works, इसकी सारी details मेरी website पे। Simply we meet in class online over Zoom. Okay, we have a class which is about like 3 hours long, and usme we have a lot of discussions, exercises, and question and answers, and you keep building your skills. So we have classes, 3 classes a week. So we have a class on Monday, and then we have a break on Tuesday, and then we have a class on Wednesday. So you get 3 classes a day, a week, and we go for like 7 weeks like this. और उसमें जो आपकी breaks होते हैं, उसमें you get some little things to apply. So you learn in class and you apply it in your life. Then you learn in class and you apply it in your life. So you keep building your skills. It's not something you have like classroom learning only, but you actually go and apply it, do it in your life, and see how it works for you. Okay, you keep building those skills and you keep developing yourself. So जो master practitioner students होते हैं, उनको advanced किस्म की task और चीजें होती हैं, और जो practitioner students होते हैं, उनके लिए different चीजें होती हैं. So they develop their skills at their own levels. Okay. So this is how it works. इसकी जो बाकी details हैं, let me just share that with you. So I will be, so this is like the sample certificate. Society of NLP, as it says, certificate hota hai, which is signed by Dr. Richard Bandler, John Levelle, the president of Society of NLP, and myself. And इसमें you learn applications is key. Coaching में, business में, there are a number of different areas in which you learn applications of this. And इसकी जो details हैं वो ये है. Okay, so the program starts
This is the schedule. It's on my website. September 6th, 8th, 10th. Okay, this say start होगा September 6th को, and last class will be inshallah on October 22nd. Class timings will be 9 a.m. to 11:30, but that's approximate. And ये यहाँ के अमेरिका के टाइम, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से लिखा है, पाकिस्तान के समझो 6 से 8:30. This may go to 9, 9:30 depending. Now, this will be live. इसकी जो इन्वेस्टमेंट है that's $1397. इस पे 14th August तक डिस्काउंट था, after which it was $997. That discount date has passed, so now it's $1097. However, इसका जो डिस्काउंट वाली चीज़ है ये मैंने अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं की है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो चुकी है. ये पिछली डिस्काउंट की थी वो भी खत्म हो चुकी है, ये भी खत्म हो चुकी है, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी. इफ यू वांट यू कैन गो एंड साइन अप हियर एंड यू विल पे $997 if you sign up now. Okay, that's one option for you. Now, if for any reason, because इसमें live attendance is must, class में is ये, because this is ये Society of NLP की certification training है. Society of NLP requires you to attend live classes. For any reason, if you cannot attend a live class, then my suggestion would be that you take this, which is my NLP home study course. और ये home study course जो है इसके अंदर you will get वो तमाम चीजें, you will learn वही तमाम, because ये recording है मेरी पिछली क्लास की. इसमें as I said, you will get group coaching sessions with me. So you will have live sessions with me जिसके अंदर you can come and talk about any of your specific things you want to work on. You get 6 group coaching sessions. Then you are added in my WhatsApp group जहाँ पे you can ask me your questions on regular basis, and you get certificate of completion from my institute, the First Institute of Dynamic Learning, LLC USA. This is what your certificate looks like when you join this course. Okay, so इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है. तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है नॉर्मली रेगुलर इट्स लाइक 497. However, if you say ये 497 मेरे लिए ज्यादा है, you can subscribe to this course. You can get monthly subscription for $97 only. You will need at least 2 months subscription. ये जो 21 sessions हैं, ये 5 हफ्ते का प्रोग्राम है. ये 5 हफ्ते में जाके खुलता है. आहिस्ता आहिस्ता सेशंस खुलते रहते हैं. तो हफ्ते में 4 सेशंस आगे खुलेंगे. पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये आपका तकरीबन 5 हफ्ते में कंप्लीट होता है. So you will need 2 months subscription. उन 2 months में you can get coaching sessions with me. You get 2 coaching sessions per month, and you can you will be added to my WhatsApp group and you will get certificate. So you will learn that. Okay, this is another option. Now, whichever option you choose, इसके अलावा I have my NLP Master Practitioner Training. मेरा जो Master Practitioner course है, आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, so this is the Master Practitioner Training, और इसकी भी डिटेल्स यहाँ पर हैं सारी की सारी. So these are pictures of groups. Master Practitioner में you learn NLP का एक छोटा सा promise है, and that promise is अगर कोई एक शख्स एक काम कर सकता है, we can find out how they do it and teach it to whoever wants to learn it. So उस चीज को हम NLP में मॉडलिंग कहते हैं. मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल पे यू लर्न दैट. सो इस प्रोग्राम को भी जब आप ज्वाइन करेंगे, सो यू विल गेट माय प्रीवियस मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग विच इज कंप्लीट प्रोग्राम. इफ यू सी, इसके जो है इट हैज 27 सेशंस. इसके 7 सेक्शंस हैं. ओके, और इसकी जो टोटल सेशंस हैं, it has 27 sessions. Okay, so इसके ये दोनों प्रोग्राम साथ होंगे. इस प्रोग्राम में जो मैंने आपको जैसे बताया कि 21 सेशन आप अगर इसमें नीचे आएंगे, so इसका जो डेट्स हैं आप देखें, इट्स एग्जैक्टली द सेम. ये दोनों प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं. ये प्रोग्राम जो मास्टर प्रैक्टिशनर वाले होंगे, प्रैक्टिशनर वाले 22 अक्टूबर को उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी. प्रैक्टिशनर का उनका जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो जाएगा. मास्टर प्रैक्टिशनर विल रिमेन विद मी फॉर अनदर 6 months and we will have monthly coaching calls
जिसमें we'll keep on developing. It's about mastery. Mastery doesn't come in a day. It takes a little while. It takes some practice. Okay, so इस program के अंदर you will remain with me for another 6 months after completion of this program, and then we'll have monthly sessions. So ये जो program है, इसकी investment जो है, it's 1497, और इसकी सारी जो details हैं तो यहाँ पर है. You can sign up. There is a discount, and again 14th August तक का वो discount था, मगर मैंने इसको update नहीं किया. If you sign up now, it will cost you $1197. और ये program भी, just in case if somebody thinks कि ये मैं नहीं कर सकता for whatever reason, you can always take my advanced home study course, this course, or advanced home study course where you can learn all of these things. Okay, so maybe you get my weekly coaching. Okay, इसके अंदर you get my live coaching, you get bonus material. इसके अंदर अलबत्ता मेरा जो master practitioner का course है, इसके अंदर you get some additional material. So you get 2 courses का material मैं इसमें आपको देता हूँ. इसमें certificate आपको मेरे institute से मिलता है, और जिसमें material आपको मिलता है, आपको speed reading training और multiply और income, ये 2 programs का material है जो मैं इसमें as a bonus देता हूँ, which is part of this home study course. And those who are joining the live training will get this home study course. इस program को भी you can purchase at $597, or you can get monthly subscription, which is $127 per month. Okay, so these are the options. If you have any questions about this, मेरी website जो है first-institute.com. You have my WhatsApp number. You can always contact me. If you have any questions, you can always ask. So I hope this makes sense. As I said, this may be the last time I'm conducting a live program. I will have my home study courses available, inshallah ta'ala, but I may not be doing live programs anymore, not NLP practitioner, master practitioner courses. So if you want to do it, this is your time, this is a chance. And I'll do other courses. I'll do NLP based courses, but not necessarily practitioner, master practitioner courses. एक चीज और, मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, so there are some like if somebody has oh जी ये बहुत महंगा है मैं नहीं कर सकता, there's always an option, there's always a choice. Okay, and that is I have number of short courses, mini courses, और जो मेरे mini courses हैं वो मेरे live program का ही. So इसमें अगर if you go here and you view more courses पे आप click करें, and then you go, there are number of so for example this, okay, this is only $27. Okay, ये मेरी NLP practitioner training के ही segments हैं. Okay, calibration skills, get people to follow you, develop powerful communication skills. It's only $27. Okay, and mastering your brain, इसके 3 parts हैं. Okay, और ये जो programs है, ये basically जो practitioner training है, ये उसी के ही segments हैं. Okay, so let me just show you that. So ये मेरी वेबसाइट पे आपको सारे मिल जाएंगे. Okay, so ये सारे जो short courses हैं, ये short courses उसी प्रोग्राम के, मैं NLP जो होम स्टडी कोर्स है उसी के स्पेसिफिक सेगमेंट्स है. सो उसका खाली कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सेगमेंट जो है, इट्स अवेलेबल एज अ कम्युनिकेशन, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से. इसका जो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला है, गेट पीपल टू ट्रस्ट एंड फॉलो यू, ये इस नाम से है. देन दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग योर ब्रेन, ये NLP में सब मोडालिटीज कैसे कहलाती हैं. उसके हमारे पास 3 सेशंस हैं, वो हर सेशन जो है एज अ सेपरेट शॉर्ट कोर्स आपके पास अवेलेबल है. इट कॉस्ट ओनली $27. Okay, so you can get all of these short courses if you want to specific areas of making profound changes. This is about timelines and NLP. If somebody wants to learn and master the timeline, making profound changes, iske part 1, part 2, part 3, it's only $27. These are short courses. So there is you want to learn, there are always opportunities, there are always possibilities, provided you want to learn. So I have a question. Will it be online or home study? I think you got your answer, Annie. Both of them. So you have online option available as well as a home study, whichever you want to join,
you have that option. So anything else, anyone, before we call the session off? Anything? Anyone? कोई सवाल? लुकमान, मेरे साथ ये होता है, मैं बहुत I just keep on, इतने साल एक चीज करा करा के फिर ख्याल आता है यार, let's move on, do something else, like you keep on moving up, so चीजें जो होती हैं वो चेंज होते रहती हैं, so इसलिए सर मिरर और मैच, whatever you like. What's the question? Okay, so thank you everyone for joining me today. Those of you who may be interested, I have another course which is a shorter version of you can say the NLP practitioner training, and that shorter version is called the NLP bootcamp. Okay, so NLP bootcamp jo hai, if you go to my website, you will find, and that's something I will show you. It's here. Okay, this is NLP bootcamp. It has 21 lessons. I conducted this. Some of you attended this and then joined my NLP practitioner, master practitioner training. So this is a 3 days program. It has 3 sessions. It costs $97. And its subscription, it costs $47 per month. You can easily do it in 3 days. It's only 3 days. It's only 3 sessions. It's only like 9 hours of training. Okay. Now, here's what. An hour from now, you can go to my website, and since you are here for so long, consider this as a gift from me. Okay. And you go to this link, and for next 3 days, you can have NLP bootcamp free of cost. This will be only for 3 days. 3 दिन के बाद आपकी access खत्म हो जाएगी. But for 3 days, you can review this NLP bootcamp free of cost, learn something, apply this in your life, make yourself better, make your life better. आप 1 घंटे के बाद जाइएगा, because मुझे इसमें website पे I'll have to make some changes for you. So I'll do those changes, and then you can have access to this program for 1 hour for next 3 days. Okay. So go learn something, make yourself better. Okay. So thank you very much, everyone. Yes, Lubna, I remember you. Thank you for attending that program, and I thank you for saying it was wonderful for you. My pleasure. And since you stayed, jo log jaldi chale gaye for whatever reason, they lose. Okay. So who stayed, they deserve something. So you get that. So thank you very much, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And if you're watching it recording, you may not get this deal. Next time, be in the live program.